Hello students, today we are discussing quant aptitude quiz for SSC examinations. The difference between our first question is the difference between simple interest and compound interest on a sum of money at 12% per annum for 2 years is rate 90. The sum is let the sum is the principal amount is 100, then first year interest is 12%. First year interest is same for both the compound interest and simple interest. So first it is the first year interest and second year interest is 12. Simple interest and compound interest is 12 and 12 plus 12 into 12 by 100. The required difference is 12 into 12 by 100 equals to 90. If the principal amount is 100, then the difference is 12 into 12, 1.44. If the difference is 90, then the total principal amount is 90 by 144, 1.44 into 100 equals to 90 into 100 into 100 by 12 into 12, then 3 is a 4 and 3 is a 4, 4 to 25, 25 into 25 is 625 and 0, 6250. Our first question is option D is the correct choice. Next question is the two numbers are such that the sum of fourth and the first number, sum of the fourth, the first number and thrice the second number is 45. The sum of 7 the first number and thrice the second number is 81. What is the sum of numbers? Let the first number is x and second number is first x. First x, first number x and second number is y according to question. Fourth the first number 4x plus 3y is equal to 45, equation 1, and sum of 7th the first number 7x and thrice the second number 3y is equal to 81. Solve both the equations. 3x is equal to 35. 7 the first number and thrice the second number is 7 the first number is thrice the second number is 81 now. It is 81. Then 36. X is equal to 12. X is equal to 12. Then put the value in equation first. 48 plus 3y around 45. Y is equal to minus 1. Required sum is 12 plus minus 1 is equal to 11. Our correct answer is none of these, D. Next question is if the sum and the difference of two numbers are 54 and 16 respectively, then the difference of their square is. Let's see, first number is x and second number is y. Required difference is x square minus y square. Okay, open the formula x plus y and x minus y.
as we know that x square minus y square is equal to x plus y into x minus y. Given that sum means x plus y is equal to 54 and x minus y is equal to 16. It is a given. So our answer is 54 into 16. 54, 16, 6, 864. C is the correct answer. Next question is, A and B can complete a work in 20 days and 15 days respectively. They started doing the work together, but after 3 days B had to leave and A alone completed the remaining work. The whole work was completed in A and B is done by B. A done in B's day 20 days. And B done it in 15 days. LCM 60 and capacity is 3 day per unit and 4 unit per day, 3 unit per days. Okay, A and B work together at 3 days, up to 3 days. Okay, then work completed in 3 days. 3 plus 4 into 3 is equal to 21 unit. The remaining work is 39 unit. 9 unit work done by A. Then time taken by A is equal to 39 by 3, 13 days. The total time in work 3 plus 13 is equal to 16 days. D is the correct answer. Next question is, the average marks obtained by 400 candidates in a 10th board examination are 35. If the average marks of passed candidate is 41 and that of the failed candidate is 31, what is the number of candidates who passed the board examinations? That is the, in this question we applied the mixer formulas. We have the ratio of past candidate average is 41 average marks and failed candidate average marks is 31 and total candidate average marks is 35. Then 4 raised to 6, 2 raised to 3. It is the ratio of number of candidates. So the passed candidate is 400 into 2 by 5, 160 students. A is the correct option. Next question is, how much water to be added to 28 liter of milk worth rate 10.80 a liter so that the value of the mixture may be rate 8.4 a liter? In 28 liters of milk, we can apply the mixture 10.8 liter प्योर मिल्क रेट. इस क्वेश्चन में हम मिक्सर को अप्लाई करेंगे. अगर इसमें हमें ये दे रखा है 10.8 लीटर प्योर मिल्क है, इसमें अगर वाटर मिलाना है तो वाटर का रेट कितना होगा? 0 रुपये पर के वाटर फ्री का, और हो जाएगा फाइनल वैल्यू होगी इसकी 8.4 रुपीज़. ये आपका रेशियो आएगा, जो आएगा क्वांटिटी का रेशियो जो मिलावट की जाने वाली 8.4 और ये हो गया 4, 2.4, 4 से 21, 4 से 6,
7:2, 7:2 के रेशियो में इसमें वाटर मिलाया जाना, पानी में, पानी और वाटर की जब रेशियो 7:2 होगा तब उसकी वैल्यू 8.4 होगी। अब 28 लीटर प्योर मिल्क था, उसमें आपको 8 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा, जिससे वैल्यू 8.4 लीटर पर लीटर 8.4 रुपीज़ पर लीटर हो जाए। और आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ स्पोर्ट्स वॉच was rate 720. A man bought the same for rate 569. 16 after getting 2 successive discount. The first 569.16 after getting 2 successive discount, the first being 15%, then what is the second discount rate? We can calculate the, इसमें हम देखते हैं कि इसका विक्रय मूल्य पहले डिस्काउंट देने के बाद कितना हुआ, तो 720 माइनस 15% ऑफ 720 इक्वल टू 100। इसको हटाओ, इसमें हम देखते हैं कि 15% 720 पे 15% जाने के बाद आपको 85% बचा। ये आपका सेलिंग प्राइस होगा एक टाइम के फर्स्ट डिस्काउंट के निकालने के बाद। ये हो गया 5 रेज़ टू, ये हो गया 36 और ये 10 गया 36 इंटू 17, 742 4 7 21 और 25 36 6 11 616। ये आपके 616 रुपये बचे, जिसमें फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद। हमने अपनी फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो है 569.16। इसको 616 में से घटाऊँ तो हमने टोटल डिस्काउंट दिया है 84 6 4 46.84 रुपये का टोटल डिस्काउंट दिया, वो दिया है 616 पे। तो हमारा परसेंटेज डिस्काउंट होगा इसमें हमारी ये यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ये हो गया आपका 612, ठीक है। 612 होगा तो ये हो गया 42, ठीक है। 42 पॉइंट, ये हो गया 612 माइनस, अगर मैं 569.16 करूँ तो 84 और ये हो जाएगा 11 2 और ये 42.84 इंटू 612 इंटू 100, ये रिक्वायर्ड परसेंटेज के लिए होगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 4 से 1 071 और ये आ गया 4 से 153। 153 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 21 2 15 7 105 तो 107, ये आपकी संख्या आ गई। रिक्वायर्ड परसेंटेज हो गया 7%। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 पाई सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कम सर्कल। पहले हम देखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये रहा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल क्या होगा? इन सर्कल का एरिया a/2√3 ये होता है। मैं मान लेता हूँ ये अगर a है तो इन सर्कल रेडियस होगी a/2√3 और इसका एरिया होगा a² / 4 × 3, ठीक है।
जो कि हमें दे रखा है 36 पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है पाई ए स्क्वायर बाई 12। ठीक है। और अगर मैं सर्कम सर्कल की रेडियस निकालूँ, ये सर्कम सर्कल की रेडियस तो वो आएगी a/√3 और इसका एरिया होगा पाई ए स्क्वायर बाई 3। मैं अगर इन दोनों में रेशियो निकालूँ, पाई ए स्क्वायर बाई 3 और पाई ए स्क्वायर बाई 4 इंटू थ्री, देन ये कट जाएगा, ये आएगा 4:1। मतलब अगर सर्कम सर्कल की रेडियस 4 है तो इन सर्कल की रेडियस 1 होगी। अब हमें दे रखा है इन सर्कल रेडियस 36, तो मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आउटर सर्कल की रेडियस या सर्कम सर्कल की रेडियस होगी 36 इंटू 4, 36 पाई दे रखा ना, ये हो गया 144 पाई। ठीक है, ये हो गया आपका बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the difference between the greatest number consisting of 5 digit and the smallest number consisting of 4 digits? ग्रेटेस्ट नंबर जो पाँच अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होगी 9 ठीक है। और 4 अंकों वाली सबसे सबसे छोटी संख्या, ये गलत प्रिंट हो गया इसमें, सबसे छोटी संख्या आएगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या होती है 1000। ठीक है, मैं अगर इसमें से इसको निकालूं तो मेरे पास ये बचेगा 9999 1000 999 898 98 जो कि आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास होता है ये हमारे पास रहता है 5 माइनस 10, ये हो गया 6 9 54 54 और बटे 5 माइनस 1 बटे 5 होगा 4 बटे 5 प्लस 86/14 को मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये 43/7 माइनस 8 बटे 7। ठीक है, इंटू 8। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। -10 54 में 4 है, 54 में से 4 गए 50/5, ये हो गया आपका 10। ठीक है, प्लस 43 माइनस 8 गए, ये हो गया आपका 35/7 5 इंटू 8। ठीक है, 5 माइनस 100 प्लस 40 इज इक्वल टू 55, तो भी माइनस के। अपना आंसर है सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग रेलवे एग्जामिनेशंस। हमारा आज का क्यूज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।